Okay, so it's all about a midnight bite from my end, ladies and gentlemen. पता नहीं मुझे ना अचानक after like 15 odd years, I just thought, let me record something in the middle of the night. The fact that I've gotten in my head, which has been jotted around. जहाँ पे मुझे लगा कि I should probably give some gyan in terms of all that I've done so far. And I was kind of rehearsing in my head, in my mind, that if I have to get into a video and if I have to really talk about it, how should I put it across? What should I talk about? And the flow ahead. On a very honest note, you know, uh, the thing that was getting in my head and kind of bothering me for quite some time, that there are so many businesses, there are so many startups that apparently getting formed up. बूटस्ट्रैप हो गया, VC फंडेड हो गया, क्राउड फंडिंग हो गया, सीरीज A, B, C, D, eventually getting into an IPO, etc. I think most of the young age startups are apparently not thinking about how important it is to put the processes and the processes in place in form of a blueprint for the business to be eventually going to be successful. See, it's all about execution. It's all about acquisition, the business, the customer acquisition. It's all about expanding the base. It's all about revenue. It's all about growth. It's all about showing that in the next 5 years, how could we probably even go to 10x. Sorry. 10x, 20x, etc. The business proposition as per the annual operating plan for the business to be successful. Having said that, the most broken leg in any of the newly formed organization in today's era, because startup has become a reach. हर कोई कुछ भी खोलना चाहता है, एक कॉन्सेप्ट आ गया, POC बन गया, उसका कुछ ROI ड्रिवन बिजनेस रेवेन्यू गवर्नेंस मॉडल बन गया. उस हिसाब से you have certain money that you've accumulated with all your hard-earned money that you have worked over the past years, and you just you thought that you have this money to invest, but the fact is, if you are aiming, or if any one of us are aiming for something which is substantial, something which is going to be yielding into result in terms of ROI, which is revenue on interest, is going to be return on intention or return on investment, for that matter. This is like a kind of mix and match. So I kind of don't want to get into the nitty-gritties of it or the nuances, but the basic learning is, अगर आपके पास वो blueprint नहीं है, अगर आपके पास वो ideology या फिर ideation stage में वो चीज़ बाहर निकल के नहीं आ रही है, अगर आपको लगता है कि आपका business sustainable होने के लिए, स्केलेबल होने के लिए, हर वो एस्पेक्ट से आपने चीज़ों को नहीं देखा है या फिर नज़रअंदाज कर गए हैं, तो दैट इज़ नॉट द मेन सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल अपेरेंटली. द रीज़न बीइंग, हमें कुछ आइडिया आता है, हम आइडिएशन स्टेज के उसके ऊपर उसका ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, एक इट्स जस्ट लाइक अ स्केलेटन ब्लूप्रिंट दैट वी काइंड ऑफ मेक इट एंड वी जस्ट गेट ऑन टू इट. लेकिन ये सीख मिली है मुझे in my journey in terms of employment, being associated with early age startups, matured startups, or a startup that is getting into an IPO, etc., or the largest conglomerate in the world which has got a global presence and like been there, done it, and still doing it, and will be doing it in the next 200 years of our survival, etc., hypothetically speaking. बट अगर धंधा करना होता है और धंधे को सक्सेसफुल बनाना होता है, द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू हैव टू बी कस्टमर ऑब्सेस्ड. Customer obsessed means customer obsessed in its true meaning. Driving obsession and democratizing that obsession across all the departments. It could be as small as an organization of 10 employees to start with. Right? It could be as large as, you have a great funding and you have employed around about 50 to 100 odd people
to take care of your product, to take care of your your tech, your engineering, your DevOps, your marketing, your finance, your HR, your admin, your operations, your customer service, etc, 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 which is like endless in the list. बट बिजनेस मॉडल आ गया आइडिएशन स्टेज से, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमें सुधारना है. व्हाट डज द कस्टमर वांट, कस्टमर को क्या हमें ऑफरिंग सोल्यूशंस देना है जिसकी वजह से ही वुड और शी वुड कम टू अस ऑन आवर प्लेटफॉर्म एट्सेट्रा. वो कोई भी इंडस्ट्री हो सकता है, वो नीड एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है. हैविंग सेड दैट, अगर हमारे दिमाग में और जहन में और वो ब्लूप्रिंट में वो चीज़ें सही तरीके से आर्टिकुलेटेड या फिर डिफाइंड नहीं है, then it is going to be creating a huge mess and a huge ruckus, because then the wheel would start running. इन्वेस्टर ने आपको पैसा दे दिया है, आपने इन्वेस्टर को प्रॉमिस किया, आपने बिजनेस प्लान दिखा दिया, आपने एओपी बना लिया, उसके बावजूद भी आपको अगर वो रिटर्न, आपका पैसा जो आपको इन्वेस्टर को देना है और आपके जेब में भी रखना है, ब्रेक इवन होना है, प्रॉफिट करना है, मार्जिन कमाना है, फलाना ढिमकाना जो भी है, राइट, विच इज़ अ टिपिकल बिजनेस नुआंसेस, राइट. आपको अपना कैपेक्स देखना है, आपके ऑपेक्स देखना है, आप कितना एमोटाइज करोगे, आपका बैलेंस शीट में क्या जाएगा, आपका जीएम कैसा दिखेगा, आपका इबिटा क्या होगा, एट्सेट्रा, आपका सर्विसेज क्या है, ऑफरिंग्स क्या है, प्रोडक्ट है, सैस है, ओनली सर्विस है, रिटेल है, जो भी इंडस्ट्री आप ले लो, जिस तरीके से. बट एट द एंड ऑफ द डे द बिजनेस इज ओनली गोइंग टू सर्वाइव बिकॉज यू हैव टू एक्वायर कस्टमर्स, यू हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर कस्टमर बेस, यू हैव टू कीप ऑन satisfying your customers, being customer obsessed, customer obsessive nature, जहाँ पे everything is correlated. तो revenue expansion, MRR, ARR, NRR, all these terminologies that we talk about, to have the the monthly recurring income that should come to our pocket, which would be sufficing the salary requirement, the staff requirement, requisition requirement, etc, 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 marketing expenditure, जो भी है, right? तो everything is ROI driven. आप किसी को हायर करके ला रहे हो एक मोटे तनख्वाह में, अगर वो बंदा आके डिलीवर नहीं कर पाता है तो वो प्रॉब्लम है. लेकिन वो बंदा आके डिलीवर कैसे करेगा, उसको तो आपको टाइम देना पड़ेगा, राइट. ही और शी इज़ एब्सोल्युटली न्यू टू योर सिस्टम. ही और शी हैज़ नॉट got any or has not gotten any clue about your business, what damage has been caused, what damage that is getting caused, and what would be the replication of the damages that has been caused in the past, or what damage that could be eventually be causing or caused because of certain wrong decisions that the co-founders or the CEOs or CBOs or the CXOs or the directors have taken in turn. So these are very complicated things, but coming back to the main mudda, cutting the long story short, is अगर बिजनेस करना है, अगर स्टार्टअप में जाना है, अगर स्टार्टअप खोलना है, आपके पास पैसा है, आप देख रहे हो ये एवेन्यूज़ हैं, क्राउड फंडिंग कर सकते हो, फैमिली से पैसा उधार ले सकते हो, you probably want to take a loan and you just want to get started with your business. Brilliant, go for it. Nothing is going to be stopping you if you have a vision, if you have a mission, and you have something articulated on paper across the verticals which would make a business successful. Never ever get into the business or start the business where you don't have a plan, when you don't have a strategy, just the idea. उस आइडिया को बेच के अगर आपको इन्वेस्टर से पैसा लेना है, लोगों से पैसा लेना है, इट्स नॉट गोइंग टू सेल थ्रू, इट्स नॉट गोइंग टू बी सस्टेनेबल, इट्स नॉट गोइंग टू बी स्केलेबल, इट्स नॉट गोइंग टू यील्ड इनटू रिजल्ट, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू द ROI, इट्स नॉट गोइंग टू get you the kind of salary that you want as a co-founder or a founder of the business, right? So never take a decision in haste, because just because problem statement आपको दिखता है, आपको लगता है आपने enough market study कर लिया है, market research कर लिया है, quantifiable data है, आपके पास quantification in terms of how it is going to be penetrating in the market, आपको ऐसे product solution बनाना है, marketing करना है, tech enablement app बनाना है, which is going to be a disruptor in the market, etc. जो भी है. But again, coming back, I'm sorry, I'm just little dragging it just because I'm little jeopardized in my head, looking at the new age startups, the way they are functioning, or a mature startup which was functioning and then
COVID, pandemic, etc. happened, that kind of shut down a lot of businesses, took away a lot of jobs, etc. But the fact is, अगर आपको धंधा करना है तो धंधे के हर वो नुक्स एंड कॉर्नर्स को देखिए. आपके की स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, आपके की वर्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट्स क्या होंगे. उसके लिए आपको पहले हेड्स नॉट नेसेसरली हायर करना है, आपको मल्टीटास्किंग करना है, आपको मल्टीपल हैट्स यू हैव टू वेयर इट, बट that has to be again neutralized. It has to be again balanced, because आपके पास कुछ पैसे हैं, आपको एक प्रोडक्ट में फोकस करना है, आपको टेक में फोकस करना है, आपको ऐप बनाना है, आपको पैन इंडिया या फिर ग्लोबली जाना है, जो भी है, जो भी आपका बिजनेस विजन मिशन है, जो भी आपके प्रोडक्ट ऑफरिंग्स और सोल्यूशंस हैं, everything keeping in mind, a business cannot be run by one showman. A business or any company that has to be run by a set of people, rather set of talented people who has gotten experience or just does not have experience but has the passion, humility, ownership, accountability, etc. So having said that, have your blueprint very robust. Have your strategy in place with experience, with new age blood, educated, not so educated but carrying experience, जिन्होंने मतलब पत्थर में अपना पिछवाड़ा घिसा है. I'm sorry, I can't be more rude than this. और जिन्होंने रास्ते में जाके अपना चप्पल घिसवाया है, तो it's like never teaching your dad how to give birth to a baby. Right? So take advice, take consultation from experienced people in the market, in the similar industry that you are trying to have your footprint to be robust, etc. But my only bone of contention out here is never try to fix something when the wheel is in motion. You need to stop. When you see there's a major problem, a glaring problem coming up and cropping up in your way, you need to freaking stop the wheel. Even if you see a Formula 1 race, when the racing car comes to the pit, it stops for 30-40 seconds for the tires to be changed. So अगर आप एक मैसेकर सिचुएशन में जा चुके हो, आप हैपजर्ड हो, आपके पास दिशा नहीं है, आपके पास डिमेंशंस नहीं है, आपको पता नहीं है कि हो क्या रहा है, सब कुछ फटा हुआ है, सब कुछ प्रॉब्लमेटिक बन चुका है और आपको सब कुछ लगता है P0 आइटम है, आपको सब कुछ लगता है आज ही फिक्स होना है. अगर आपको सब कुछ ऐसे ही लगता है तो आपका प्लानिंग इतनी गलती से आपका प्लानिंग इतना गलत था, आपका स्ट्रैटेजी इतना गलत था, आपको कूदना था, आप कूद गए, आपको स्विमिंग पता नहीं है, पर समवन यू हैड एन आइडिएशन, मैं तो इंग्लिश चैनल भी पार कर लूँगा, मैं तो थोड़ा बहुत स्विमिंग आती है, तो बट स्विमिंग आती है तो क्या इंग्लिश चैनल पाने के लिए आपके अंदर होगा क्षमता है क्या? कैन यू कीप ब्रीदिंग ऑन, राइट? हैव यू टेस्टेड योर परमुटेशन कॉम्बिनेशन कि आपका बॉडी किस मुकाम पे जाके गिव अप कर देता है? तो द फैक्ट इज सारी चीज़ों को सही तरीके से पहले से उसको तो पेपर में डालिए, उसको वाइट बोर्ड में लिखिए, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाइए, उसका शॉर्ट टर्म विंस क्या है, उसका लॉन्ग टर्म विंस क्या है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है. एक 19 साल का लड़का भी बिलियनियर बन सकता है, लेकिन क्या वो हर 19 साल का बंदा बिलियनियर बन सकता है? दैट्स द क्वेश्चन. कुछ भगवान जी का आशीर्वाद होता है, माँ बाप का आशीर्वाद होता है, एक गिफ्टेड टैलेंट होता है, हर कोई नहीं बन सकता है. तो वी हैव टू फेस अ रियलिटी. कुछ लोग 40 साल की उम्र में जाके सीखते हैं कि ज़िंदगी का दस्तूर क्या होता है, कौन से मुकाम पे, कौन सी नुक्कड़ में आके, दरवाजे में कौन आके दस्तक दे के जाएगा, ये किसी को नहीं पता, राइट? सो लेट्स नॉट बी हेस्टी इन आवर डिसीजंस. बिजनेस आइडिया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सोल्यूशन अप्रोच भी है, लेकिन उसको एक सही तरीके से उसको प्लॉट कीजिए. उस प्लॉटिंग के बाद आपको शॉर्टफॉल सीखना है, क्या क्विक विंस होगा, क्या क्विक फिक्सेस होगा, क्या लॉन्ग टर्म विंस होगा, उसके लिए क्या गैंट चार्ट होगा, कितना टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं. मतलब इतनी चीज़ें हैं कि मतलब आपको तो 1 साल ही लग जाएगा उसको सही तरीके से प्लॉट करने के लिए. एंड देन पोजिशन इन द राइट वे एंड देन गेटिंग विद इट. आई एम श्योर आई एम नो वन टू टॉक अबाउट इट, बट विथ माई लिमिटेड years of experience, whatever I have learned in my last 15-16 years of experience working with large conglomerates and corporates and with mature and early startups, which I've already told you. So
compassion, is like an opaque thing, which is like ownership, perseverance, uh, assertive, compassion and humility. So ये सारे pillars हैं जिसमें हमें मद्देनज़र रखना है. We can't get away from it. हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि if we do this and just start getting into the middle of the ocean and start sailing the boat, then we would not be in a life of pie situation जहाँ पे वो फिल्म बनेगा और हम भूखे मर जाएंगे. With this, I say goodbye. Thank you very much. I don't know what extent I made sense, whether it made sense, not made sense, partially made sense, etc. etc. I had something in my heart. I had to pour it out. तो मुझे कहना था तो मैंने कह दिया. इतना कुछ सोचा नहीं है. But hopefully शायद आप लोगों को अच्छा लगे ना लगे, जो भी है बता देना, जैसे भी है बता देना. I'm very open to feedback, because being receptive to feedback will only make you better and make you make things better for that matter. So thank you, take care, have a good day ahead, and see you soon in my next video.